अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के ऊपर विवेचन कर रहे हैं। कल देखे ये सभी अनुभव महाचिति रूपा वायु के स्पंदन ही है। इसीलिए वे सब अनुभव ब्रह्मरूप गगन की शून्य रूपता का ही सेवन करते हैं, यह आप जानिए। भाषा को समझना चाहिए, बड़ा बड़ा गहरी भाषा। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं संसार के रूप में, सृष्टि के रूप में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं हम कि मैं और मेरा, या दर्शन, दृष्टि और दृष्टा, इसी रूप से देख रहे हैं। और जो कुछ भी हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सारे संसार, मैं भी, मेरा भी और दुनिया जो कुछ है, सब कुछ क्या है, वह उदाहरण दे रहे हैं। वो उदाहरण ये दिए कि वायु रूप है। वो कह रहे हैं वायु के स्पंदन ही है, महाचिति रूपी वायु। चिति वही महामाया, माया रूपी वायु। चिति जो नहीं है, शक्ति का नाम। जो शक्ति स्थिर होने से कोई शक्ति नहीं होता है, और अस्थिर हो गया तो उसको शक्ति कहेंगे। तो अस्थिरता का नाम यह चिति रूपी वायु। वायु का उदाहरण क्यों दिए कि वायु ही स्पंदन पैदा करता है। आकाश में वायु स्पंदन पैदा करता है, तभी फिर वायु के रूप में हम समझते हैं उसको। स्पंदन का नाम वायु, और स्पंदन पैदा होने से फिर उष्णता उसमें आएगा, उष्णता से फिर जल का, जल से फिर मल का, मल मतलब मिट्टी। इसी प्रकार पांच भूतों का मिश्रण में हम जो संसार को देखते हैं, वो चित्त रूपी वायु ही समझो। वायु मतलब स्पंदन, स्पंदन का नाम वायु। तो इसको हम दूसरे भाषा में भी तो बहुत बार हर वक्त यही कहते हैं कि स्पंदन क्रिया का नाम शक्ति, माया, संसार, कार्य और कारण, अथवा कार्य और कार्यफल, अथवा दृष्टा, दर्शन, दृश्य, जो भी कहेंगे उसमें स्पंदन का एक प्रक्रिया दिखता है। प्रक्रिया के बिना ये कुछ नहीं हो सकता है, मतलब चलनशीलता। और उसी का नाम स्पंदन कहते हैं। और उसी का नाम दूसरे भाषा में भी हम कहते हैं विषमता। दूसरे भाषा में विषमता, विषमता का नाम संसार और समता का नाम परमात्मा। शॉर्टकट मारा, शॉर्टकट। विषमता का नाम दुनिया, समता का नाम परमात्मा। उसी को मुक्ति मानो, इसको बंधन मानो। है चंचलता का नाम बंधन और स्थिरता का नाम मुक्ति। दो ही चीज तो है दुनिया में, और उसको हम अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीका से, अलग अलग दृष्टिकोण से क्या क्या नाम देते हैं, कितने कॉम्प्लिकेशन उसमें पैदा कर देते हैं। यही बात है, सरलता से सीधी बात। जहाँ देखे गतिशीलता, चंचलता, परिवर्तनशीलता, वो सारा को झूठ मानना और उसको मानना अस्थिरता के रूप में एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। और वही है ये संसार। उसमें हमको
कोई सफाई नहीं दिखता है, साफ नहीं होता है वो। क्यों? कि वो चंचलता के कारण वो संदेहात्मक हो जाता है, भ्रम पैदा करता है। इसी का नाम अज्ञान, इसी का नाम अविद्या। और ये स्थिर नहीं रहने से इसी का नाम हमेशा वर्धनशील है, हमेशा बढ़ते रहेगा। और बढ़ने के कारण समझ में नहीं आता है क्या चीज़ कैसे कहाँ गया, जो दिखता है वो नहीं दिखता है। ये सारे चीज़ एक ही कारण से है, अस्थिरता है उसका कारण। और उसी का नाम दुनिया मानो, माया मानो, शक्ति मानो, जो कुछ भी मानो, सब उसी का नाम है। और उसका नाम स्पंदन क्रिया भी है, उसी का नाम तरंग भी है, विषमता भी है। इसीलिए वे सब अनुभव, जितने ये अनुभव हम कर रहे हैं, वो ब्रह्म रूप गगन की शून्य रूपता का ही सेवन करते हैं। हमारा आकाश कैसा है? ये सब आकाश में है। आकाश जिसको हम इथर या स्पेस मानते हैं, उसी में सब कुछ है। उसको छोड़ कर तो कोई कुछ नहीं हो सकता कहीं। तो आकाश का सेवन करते मतलब, मान लो ये घड़ी एक टेबल का सेवन करता है। सेवन करता मतलब उसका आधार में आधारित है, उसी के सहारा से वो जीता है। ये सहारा नहीं होगा तो वो कैसे आकाश में नहीं रह सकता है। तो ऐसे ही जितने वस्तु, जितने नाम रूप हम संसार में देखते हैं, वो सारे चीज़ें आकाश में ही है। आकाश उनका आधार है और ये सब आधेय है। आ गया समझ में? ये जितना जो कुछ हमको दिखाई पड़ता है, आकाश रूपी ये जो परमात्मा रूपी आकाश, उसी में ये सारा है। शून्य रूप जो है, शून्य रूप क्यों कहा आकाश को? आकाश सबका आधार होता हुआ भी आधार नहीं है। आकाश कैसे पकड़ेगा? परंतु आकाश सबको धारण कर रहा है, हम देखते हैं। और इसी के कारण अगर ये एस्ट्रोलॉजी में हम जाते हैं, क्या खगोल अथवा उसको एस्ट्रोलॉजी का क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, उसका हिंदी में भविष्यवाणी नहीं उसको कहेंगे ज्योतिर्विज्ञान। ज्योतिर्विज्ञान उसमें हम देखते हैं कोई ऐसा उल्का पिंड है, एक पिंड है जो हमेशा गतिशील है, कभी स्थिर नहीं है। और कभी कभी धरती या सूर्यमंडल के आसपास आता है। वो कैसा पाराबोला, कहीं से आएगा पता नहीं, और कहाँ जाएगा पता नहीं, कब तक जाएगा, कहाँ से आया, कब से आया पता नहीं। जब हमारे पास हो करके गुजरेगा तब थोड़ा देर के लिए हमारे सामने आ जाता है। कहाँ से आया अब कोई नहीं जानता है। ये खगोलविद भी नहीं जानते हैं कहाँ से आया, अनंत है। घूमते रहते हैं ऐसा। और इसी के साथ साथ ये निष्कर्ष के साथ साथ, सिद्धांत के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए, और ये भी कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी में कि हमारा सूर्य भी चंचल है, ये स्थिर नहीं है। सूर्य के चारों तरफ तो हमारा ग्रह सब घूमते रहते हैं, और सूर्य ये अपना परिवार को ले करके कहीं घूम रहा है। कहाँ? हमारे जो गैलेक्सी, जो
क्या कहते हैं, छाया पथ है, उसके अंदर घूम रहा है, किसी को पता नहीं। और हमारे जो छाया पथ है गैलेक्सी, वो भी स्थिर नहीं है। दुनिया में कोई स्थिर नहीं है। अस्थिरता का नाम दुनिया हम पहले से मानते हैं। कोई नहीं स्थिर। हमारा गैलेक्सी भी ब्रह्मांड में कहाँ जा रहा है कोई किसी को पता नहीं। हमारे वैज्ञानिक लोगों का दिमाग इतनी है। जैसे मच्छर के में अभी जो मच्छर आकाश को मापने के लिए चला, जो जुगनू सूरज का तेज को मापने के लिए गया, ऐसे ही मानो हमारे वैज्ञानिकों का खोपड़ी। हम क्या समझेंगे? हमारे भी मन और बुद्धि इतने संकुचित, इतने असमर्थ हैं, कुछ नहीं समझ सकते हैं। फिर भी हम कोशिश में लगे हुए हैं, हम सब समझ जाएंगे। यही तो है विडंबना। और इसको समझ करके बुद्धि और मन को जो किनारा कर दिया, वही समझदार है। जो समझने के लिए कोशिश नहीं किया, वही समझदार है। तब फिर सब समझ में आ जाता है कि समझने के लिए कुछ नहीं, यही समझ में आता है। इसी प्रकार ये सारा आकाश का शून्य रूप का सेवन करते हैं। सारा संसार वो शून्य रूप है, सब मान लो, सब शून्य रूप है। We are discussing on the same point again and again from different angle of vision, that what is the meaning of extrovertness and what is introvertness. Introvertness, we can say, is absolute equilibrium, and that can be expressed by language as it is center of everything, it is holder of everything, or it is smaller than the smallest and bigger than the biggest, and introvertness, and that is absolute constancy which never changes, changeless. So there will not be any name and form, and mind and intellect cannot reach it. And the opposite is extrovertness. Extrovertness means always uncertain, always fleeting, and in motion, always disturbed, interrupted, or we can say a changing phenomena, eternally changing, and also we can say it is vibratory system, and that is the principle of the basic principle of whole innumerable universes, where nothing is stable, everything is in motion, and that is called extrovertness. It has got no end. Introvertness has got end, and that is, in our language, we can, philosophical language, we can say that is the absolute steadiness, or we can say it is absolute freedom. Restlessness is not freedom, and steadiness is called freedom, because you are free from everything, completely at rest. That is called peace, silence, everything. From that angle we can name it differently, but same thing. That is called introvertness. That is called liberation also.
freedom, and that is called steadiness, absolute constancy, equilibrium, or center for everything, holder of everything, and that is introvertness. Extrovertness means opposite of it, all the opposites. Ever restless, ever changing, ever flittering, and ever in motion. So in that, cause and effect, and action and reaction, seer and seen, everything from different angles we imagine. And that is given by some example to understand. You see, just as the sky which is empty, we always say a sky is empty, but it is also from other angle, opposite angle, it is full, it is solid. Solid means nothing else can disturb it or enter into it. But yet, it holds everything, so nothing is without this. So it is solid. It is all pervading. The sky also is seen in the concrete wall. It is there. So all pervading, so it is all pervading emptiness. Nothing can enter into it. It can enter into everything. So it is the holder of everything, container of everything. In this way, all depend upon the sky. Similarly, he says, all the names and forms, whatever we know as the world, extrovertness of the mind, whatever we understand as world with names and forms and etc. So all these depend upon, sustained by the sky, and it is not stability, it is in motion, so it is extrovert. And everybody is dependent upon this emptiness. From other angle we can see emptiness means meaningless, which is nothing, which is not there. Can you catch in common parlance, not logically? Can you catch the sky? Can you hold it? Can you disturb it? We can deal nothing with the sky. It is so subtle and so all-pervading. Similarly, he says, the whole world is held by this sky, which is nothing but conscious sky, awareness sky. Why it is aware of itself? Because it knows. Just as you know you exist, that is called awareness. You know that I am, that is called awareness. So whatever is there, it is aware of itself, means aware of its existence. So that is called awareness sky, Chidakas. Chidakas. And that is greater than this our so-called elementary sky. Because this elementary sky also is held by awareness. You are aware that sky is there, isn't it? Then only sky is there. Yesterday we were
discussing some proof must be for everything. A seer should be there to prove that seen object is there, or else seen object cannot be proved. So seer must be there. So in this way, the sky is aware of the absolute awareness. So the absolute awareness is the holder of this elementary sky, what we know as sky. Everything, whatever you think, whatever you speak, whatever you perceive by your senses as a world, that is dependent on the absolute sky, which is awareness, sky of awareness, which is from some angle can be said it is empty, because nothing can be there, because it is absolutely pure. There is no possibility of the second one. So everything is complicated, topsy-turvy. Everything is there, but nothing is there. So both the meanings from different angles is true. Yes, Guruji. महाराज, from a relative point of view, आकाश में छेद है, कहीं ऐसा होल. आकाश में छेद है और आकाश सबको छेद कर लेता है दोनों तरफ से. आकाश में छेद है, नहीं तो आकाश में आप घुसे कैसे, और आकाश आपके अंदर कैसे घुसा? आपके अंदर छेद करके घुसा. वायु आपके अंदर कहाँ घुसा, कैसे घुसा? कितने छेद है देखो 10 छेद है. 10 द्वारे नवद्वारे पूरे दही न कुर्या न कारयत. क्या गीता में कहा ना, नहीं इतना छेद है सब, वो आकाश ही छेद करके घुसा अंदर. स्वामी जी, छेद हो बोल के if we start thinking, then how we think of completeness? अरे छेद को हम जैसे समझते हैं वो छेद नहीं है. ये हम जो समझते हैं वो समझते नहीं. Whatever we understand, we don't understand it. Making a hole and entering means we don't understand how it is. Relatively we understand. But true meaning is all pervasiveness. That is how it is everywhere there. It doesn't need to make a hole and enter. Even also in ourselves. Everywhere. All pervasive. All pervading. That is called making a hole and entering. Relatively. But absolutely, because it is all pervading, so it is present everywhere. I give the example always. I am in the nail, I am in the top of the hair, I am in the toe, I am the nose. Isn't it? So have I not entered in all these places because I am present there? Have I not entered there? That means I am all pervading in the whole body. That is called entering into. Or else there is no other way to express it. And I always warn you, all the words are meaningless. Language is meaningless. You have to understand the indicative meaning. Indicative meaning always should be understood. Whatever you understand, you don't understand it because you understand it relatively, which is not reality. Relativity is not reality. Don't forget all these formulas. They are the formulas. Relativity cannot be said to be equilibrium or constancy. No.
and it cannot be said as one without a second. Where there is two, then only there will be relativity, relationship, comparison, and all these transactions. If there is no two, then all this is impossible, and so no action, no understanding, no reach of this mind, senses, and intellect is there. Nothing can reach there. No words, no language can reach it. If your mind and intellect cannot reach it, where is the question of language? सबके परे, तभी तो परमात्मा नाम दिया गया. हाँ, परम. He is the end of everything. End of everything. End of means the climax, and there cannot be any motion. End of everything means whatever you think, whatever you know, whatever you do, whatever you speak, that ends there. End of everything. That also means that is the climax. Beyond that, nothing is there. It is beyond everything. Just as relatively we understand the horizon is the end of everything. Relatively. क्षितिज को हम सबका अंत मानते हैं, दृष्टि का अंत मानते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है. तो ऐसे ही परमात्मा, ऐसे ही परमात्मा को समझो. जो समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देते हैं आधा अधूरा, इतना समझना कि समझने के बाहर है, समझ के परे है. इतना समझने के लिए ये सारा समझना चाहिए. समझो का नहीं? हाँ जी. So the black hole and the white hole in the sky is not the whole. Black hole is not a hole. It is the greatest whole, which holds everything. उसी को हम उसमें क्या विष्णु सहस्त्रनाम में कहता ना, महागर्त, जहाँ सबका अंत हो जाता है. समय और देश और शर्तें, परिस्थितियाँ, कोई कुछ नहीं काम कर सकता उधर. और उसको वैज्ञानिक भाषा में कहता है द eventless or the horizon of events, where events cannot reach, means action and reaction or any thoughts or anything, nor time nor space, nothing can enter into it, where everything enters and loses their identity. They lose their identity. That means entering, also that is non-entering. Entering means completing their, reaching their end. So it is entering and non-entering also. Always we have to see from both opposite sides. समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि समझ नहीं सकते हैं. कुछ उदाहरण दे करके थोड़ा शांति के लिए मन को सांत्वना. भद्र वशिष्ठ जी राम जी को बोल रहे हैं, हे भद्र, जैसे वायु और वायु के स्पंदन में कोई भिन्नता विद्यमान नहीं है. स्पंदन नहीं है तो वायु नहीं है.
मतलब वैसे भी कल भी हम यही विचार किए थे, द्रवता नहीं है तो जल नहीं है, जल का द्रवता जल से अलग नहीं हो सकता है, अग्नि का उष्णता अग्नि से अलग नहीं होता है, स्वभाव और स्वभावी, देह और देही ये सब अभिन्न है, परंतु देही को देह उसका स्वभाव करके मान लिया गया। स्वभाव जो दिखता है, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, दृश्यता को हम, ग्राह्यता को हम स्वभाव मानते हैं, स्वभाव नाम दिया गया। तो इसी प्रकार जैसे वायु का स्पंदन ही स्वभाव है, स्पंदन मतलब चलनशीलता। वायु अगर नहीं, दूसरे भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं, आकाश जब चलने लग जाता है उसी का नाम वायु। आकाश जहाँ स्पंदन नहीं है उसमें स्पंदन पैदा हुआ तो उसी का नाम वायु कहा गया, समझे। तो स्पंदनशीलता को जैसे हम वायु मानते हैं, ऐसा दोनों जैसे एक दूसरे से अलग नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और ब्रह्म को सृष्टि में भी, ब्रह्म का सृष्टि में भी कोई भिन्नता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन, इसको अगर मान लिया गया तो संसार खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे वायु से हम स्पंदन को, चलनशीलता को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक ही है, मानेंगे। अग्नि को उष्णता से अलग नहीं कर सकते हैं, उष्णता को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही का नाम है ना। जल और द्रवता ये एक ही का नाम है, अलग नहीं है। ऐसा वो कह रहा है, हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगत वो नहीं भिन्न तनु, इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भवसागरम उद्धरति। कहने का मतलब, जो इसको मान लिया परमात्मा और संसार एक दूसरे से अलग नहीं, इसीलिए संसार को परमात्मा का स्वभाव कहा गया। हम कहते हैं ना नेचर, स्वभाव, प्रकृति, एक ही अर्थ। तो प्रकृति को प्राकृत से अलग नहीं कर सकते, देही से देह को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही है। प्राण और प्राणी, प्राण को जो धारण किया वो दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। तो ऐसे ही जब संसार और परमात्मा को हम एक मान लेंगे, जो संसार स्वभाव के रूप में परमात्मा का है अभिन्न अंग, अभिन्न, ये अलग हो ही नहीं सकता है, दिखता अलग पर नहीं अलग। इसको दृढ़ भाव से, इसे सिद्धांत को अगर हम मान लेंगे दिल से, तो फिर दुनिया मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा, और सब जगह पर वो परमात्मा का अनुभव होने लग जाएगा। उसी को कहते हैं समदृष्टि, समता, योग समत्वम योग उच्यते। योग इसी को समझाता है, और समदृष्टि भी इसी को कहते हैं। जो इसको समझ लिया, उसके पत्थर में जिसको देखता है, जिसको देखेगा, सोना चांदी में भी उसी को देखेगा, पेड़ लता में, पशु पक्षी में, नर नारियों के अंदर, सब के अंदर वो एक ही को देखेगा। अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रिय है, दिखता है और सबको प्यारा है। इसीलिए उसी को हम दूसरे भाषा में सत चित आनंद भी कहते हैं। है
जानकारी है और उसी से संतुष्टि भी है। सत्य चित आनंद, एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस। ये खाली शब्द हैं, इसका अर्थ में कोई भेद नहीं। अलग अलग शब्द हैं लेकिन अर्थ में कोई भेद नहीं, अर्थ तो एक ही का है। इतना ही हमको समझना चाहिए कि गुणी और गुण ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, एक ही है। कितना उदाहरण हमारे पास सामने है। अग्नि से उष्णता अलग नहीं है, जल से द्रवता अलग नहीं है, आकाश से शून्यता अलग नहीं है, पवन से स्पंदन अलग नहीं है, प्राण से प्राणी अलग नहीं है, देह से देही अलग नहीं है, जड़ से जड़ता अलग नहीं हो सकता है, जीव से जीवत्व अलग नहीं हो सकता है। हर चीज़ का एक स्वभाव है, जैसे अभिन्न उससे है वैसे ही परमात्मा से संसार अलग नहीं है। संसार से परमात्मा अलग नहीं है। हरिरेव जगत जगदेव हरि ही, एक दूसरे से मिली जुली सरकार, मिली जुली। ये बाहर को देखते हैं दो हैं, नीतीश और बीजेपी, ये बाहर को दिखते हैं दो, पर अंदर मिल करके सरकार गठन कर लेते हैं। कहाँ पहुंच जाओ। बाहर दिखते हैं दो, अंदर जा करके साथी रसगुल्ला खाते हैं। बता, बाहर पेंडाल में झगड़ा करेंगे, माँ बहन की गाली देंगे, और जा करके होटल में एक प्लेट में रसगुल्ला खाएंगे। ये पॉलिटिक्स। स्वामी जी, जब भी society is not without the supreme existence, हाँ, भगवान, तो मनुष्य का आचरण क्यों खराब होता है? Why we act differently? स्वभाव तो है ना। क्या सुनो, आप जो अग्नि में जो उष्णता देखते हैं उसमें अंतर होता है या नहीं? उष्णता में, अग्नि में अंतर नहीं, लेकिन उष्णता उसको हम टेम्परेचर को मानते हैं, तो उसमें भिन्नता है या नहीं? उष्णता में डिग्री में मापते हैं ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिग्री में अंतर नहीं दिखते, प्लस माइनस है 50 डिग्री। आजकल कितना हमारे इधर दिन में 12-13 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर। सुबह 1-2 में आ जाता है, थोड़ा 1-2 घंटा के लिए। अच्छा, तो टेम्परेचर में भिन्नता है या नहीं? इसी सूत्र के अनुसार कहते हैं सूरज और चंद्रमा दोनों एक ही हैं। सूर्य में प्रकाश अथवा उत्ताप ज़्यादा है, चंद्रमा में कम है, बस इतने ही तो अंतर है। अग्नि के बिना कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है, पंचभूत सब जगह पर है, समझे? इसलिए सूरज चंद्रमा में इस दृष्टिकोण से अंतर नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से चंद्रमा तो रात को आएगा, सूरज दिन में आएगा। रात निशाकर नाम देते हैं उसको, इसको दिवाकर नाम देते हैं। कितने अंतर है, एक दूसरे से अपोजिट है। डिफरेंटली एक्ट में भी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग। इसी को जो समझेगा, भिन्नता को अभिन्नता के अंदर जो समझेगा, अभिन्नता को भिन्नता के रूप में जो समझेगा, उसी को तो गीता में कितनी दूसरे भाषा में कहते हैं, कर्मणि अकर्मजः पश्येत अकर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत।
और कर्म में अकर्म को, और भाव में अभाव को, अभाव में भाव को. One who sees presence in absence and absence in presence from one point. Second point, he says in Gita, one who sees action in inaction and inaction in action, he is real seer. He does everything while doing nothing. Both the opposites should be taken together. If you take out the head from the coin, there cannot be any tail. There cannot be any coin. If you take out tail from the coin, there is no coin, no head. So both, all the three, both the nature, head and tail, as a coin, they are one. You cannot separate them. One who sees one, he sees and he uses it as a rupee, isn't it? As a coin. If he sees only head, not the coin, not the tail, he cannot use the coin. There is no value for him of the coin. So we have to see, our vision must be perfect. Because of our faulty vision, we misunderstand everything. That's why we are telling, though you see not. Though you hear not. Because you are always one-sided. You should be all-sided. That is called impartiality. If you are one-sided, you are partial. You are not justified. Justice means both the sides. And impartiality, जिसको हम न्याय कहते हैं. न्याय किसको कहेंगे? एक तरफा न्याय होता है क्या? न्याय तो दोनों तरफ का होता है, निरपेक्ष होता है, किसी का अपेक्षा नहीं रहता है. इसी प्रकार जो one who has understood the nature of the nature holder, they are one, two sides of the one coin. They look differently, but they are one and the same. They are inseparable. One who understands like this on the absolute and the world, which is nature of the absolute. Just as the water and the liquidity are one and the same, the heat and the fire, one and the same, body and bodied, they are one and the same. Similarly, everywhere, in every name and form, we have to hold both together as a one. Every name will have opposites. Every form will have opposition. Because the whole world is composed by pairs of opposites. So from both the sides you have to see, and you have to take both the sides as one. That is called justice. That will be justified. You are the man of understanding, and you are the doer of everything, all doer, though you do nothing. Then only you are considered as non-doer and all-doer, and all-seer and non-seer, and silent yet always restless. Both the opposites together.
This is the final conclusion. There is no extrovertness, no introvertness. They are opposites of one action. So when both compromise and become one, then there is no question. It is absolute equilibrium. Yes. This is what he expresses in the end. Oh Ram, please understand this. Hold this. Till now, we were discussing opposites, extrovertness and introvertness, differently. One is opposite to the other. Conclusion is, there is no introvertness, there is no extrovertness. Absolute silence is there. It is raining all over. Justified. That is the final. And if you can accept this, then no question can arise. No question at all. Question is raised on dualism. Either or. What it is, how it is, either this or that. When it is, either now or then. Always there will be two, then only doubt and then only question. So when everything ends, where is the question? Absolute silence. That is how it is said, the language of the absolute is silence. मौन. मौन ही उसका भाषा है. कब तक वह भ्रांति रहती है, इस पर कहते हैं. तो भ्रांति का समाप्त हो जाता है यहाँ पर कहे तो वो कह रहे हैं भद्र, जैसे वायु और वायु के स्पंदन में कोई भिन्नता विद्यमान नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और ब्रह्म की सृष्टि में कोई भी भिन्नता नहीं है. अपने स्वरूप को भ्रांति हो जाने पर उसमें विभिन्नता भासती है, पर वह स्वप्न में स्वमरण अपना मरण को मरण की सदृश असत्य भाव है. असत्य भाव है. उदाहरण वह दे रहा है. ये जो भ्रांति हमारा है, हमारा शंका है, उसी का नाम जिसको अविद्या नासमझी मानते हैं, अज्ञान मानते हैं. अज्ञान होने से भ्रांति होता है, सवाल उठता है, प्रश्न उठता है. तो वो क्यों होता है? स्वरूप की भ्रांति क्यों होता है? स्वरूप की भ्रांति इसलिए हो गया, मैं कौन हूँ. मैं को इसी को तो हमेशा वेदांत में यही कहा जाता है कि हमेशा आत्म विश्लेषण करना चाहिए. सेल्फ इंक्वायरी हमेशा करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ, कब हूँ, क्यों हूँ. ये सब प्रश्न अपने को पूछना चाहिए. इसी को कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी. हु एम आई? यू मस्ट ऑलवेज इंक्वायर, हु एम आई? Who am I? Where am I? How am I? Whom am I? What for am I?
When am I? All these questions should be answered, and answer is one only. One. One answer is sufficient for all these questions. One answer only. This is called self-inquiry, आत्म-विश्लेषण. मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ये भ्रांति इसलिए है, हमको ये पता नहीं चलता है, क्योंकि बदल जाता है. बदल जाने के कारण भ्रांति हो जाता है. आत्म भ्रांति. वी आर ऑलवेज ignorant of ourselves. इसको हम कितने बार विचार किए हैं. अरे वो हिस्ट्री तो हम बहुत रटते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, आवर कंट्री हिस्ट्री. वी go on cramming only to get some marks in the exam. We know all the dynasty of some kings or some something, some kingdom. Everything we know, we have by hearted. But alas, we don't know our own heritage. Who am I don't know. And who my father is, who is my father? Of course, some name and form we have known. That is not the reality. And who is my grandfather? Of course, name-wise also we don't know who is our great-grandfather. We don't need to, we don't ask about all these datas, but we by heart all the datas of the whole world. So is it not urgent? Is it not emergency? Is it not important? Is it not first and foremost to know about myself? I don't know who am I, and I know about you. What a tragedy. हाँ? क्या विडम्बना देखो. हाँ? अपने बारे में कुछ नहीं पता और दूसरे सारा दुनिया के बारे में पता है. वो पेड़ को केला बोलते हैं, वो पेड़ फूल का पेड़ है, वो है वो रुद्राक्ष का. हाँ जी, मैं जानता हूँ. मैं कितना जड़ी बूटी जानता हूँ जानते हो? मैं बहुत सारा जानता हूँ. परंतु हाय रे भगवान, मैं अपने को कौन है मैं नहीं जानता. हे विधाता, है क्या हंसी की बात है. I know everything but myself. Nowhere is not known, but the knowledge is known. What a tragedy. Is it not first and foremost duty of everyone to know his own self? हाँ? हमारे शरीर में कैसे ये शरीर बना है कोई जानता है क्या? जोगी लोग जानते हैं कितने नस नाड़ियाँ, कौन क्या काम करता है. कहा गया हमारे शरीर में 73 करोड़ और बाकी डिजिट्स हैं. करोड़ नस नाड़ियाँ लगभग, ये सब बिछा हुआ है, नाड़ियों का जाल है. Network of nerves. This whole body, about 73 crores. crore को million कहते हैं. Millions. 730 millions.
so much nerves have a network on the body, then only body works. And if one nerve is inactive, then you are a patient, you are a diseased fellow. You feel disease. You are not at ease. We don't know all this. Do you know? Nobody knows. But we know, we are a doctor. We can suggest so many medicines to others. There is a saying, this world is full of doctors, lawyers, and gurus. Everybody is a guru. Everybody suggests others, do like this, do like that. Your problem will be over. But he is himself a problem, interfering in everyone. So this way, this is how problem. I is a problem. I is a problem. हाँ? आज प्रॉब्लम आ गया. हाँ गुरुजी. महाराज 2 दिन पहले तो बोले थे the world is network of words. अभी तो body Network of nerves and network of energy also. Not one network, so many networks. Network of your internet. Whole world. both are the same. Same. If you say same, it is same. तो हमको समझना चाहिए कि ये वही आखिर में कह रहे हैं, हमारे जो भ्रांति है, ये भ्रांति इसीलिए है, अपने स्वरूप की भ्रांति इसीलिए हो जाने से उनमें विभिन्नता भासती है. मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर भी हूँ. विचार करने से शरीर नहीं हूँ, पर साधारण तौर से तो मैं शरीर हूँ. मैं शरीर भी हूँ, हाथ भी हूँ, नाक कान आँख पेट पीठी हाथ पैर सब कुछ मैं ही हूँ. अरे तू इतना कैसे हो सकता है क्या? अगर ऐसा सब कुछ तू है तो तू हाथी घोड़ा भालू और चिड़िया और चींटी भी बन सकते हो क्या तुम? क्यों नहीं कहते हो मैं सब कुछ हूँ? तो ऐसा अगर कहोगे तो सारा दुनिया मैं हूँ और मेरा है, क्यों नहीं कहते हो? इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम. क्यों नहीं कहते हो? हम आधा अधूरा रुक जाते हैं. मैं हाथ का नाक ये तो हूँ, मैं मकान नहीं, मकान मेरा है. परंतु मैं कहता हूँ तो मैं हाथ हूँ, पर बोलते वक्त व्यवहार में कहता हूँ मेरा हाथ है. तो फिर तू कौन होगा? ये हाथ तेरा कैसे हो गया? इसी को अनुसंधान करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए. इसी का नाम है मनन. मैं कौन हूँ? दिस इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन, रियल कंटेम्पलेशन. टू नो योरसेल्फ. Who am I? To contemplate and inquire about myself. That is, who am I? Because we don't know this, that's how all the problems and doubts and all these misunderstandings. It is
how it is, he gives a beautiful example. Just as you see your death in your dream, is it real? You are dreaming that you are dead. Huh? How it is? Have you seen it? Have you seen? In your dream you are dying. Your death is seen in your dream. Yes, I'm going to die. Huh? Or I'm falling from somewhere. That is not death. You have to see you are lying lifeless in the dream. You are dead and your dead body is taken to the burial ground or it is put in the fire. Have you seen like this? Of course, it is not possible, but some people see it. And this is called the highest dream. That means it has good symptoms, good signs. Death means end. So your troubles will be ended in the relative world. It shows it. It is indicative. Very means it is best dream we can say. To see your own death in the dream. Falling down or being entangled somewhere or entering into thorny bushes, not able to come out, that is entanglement or problematic dream. But seeing your death, I have died and this is my dead body. Have you seen like this? This is seen by some people. It is a good sign, good dream. And it has got no meaning, but it has got some subtle meaning, dream, according to dream science. But in a common parlance, it has got no meaning. How can I see my death myself? I am alive, then only I can see. So death is impossible to see by yourself when you are alive, isn't it? हैं? जोक है, बोलो, अरे बोलो यार। डेथ बता रहे वो मेरा शादी हो रहा है वो कोई सपने में देखा वो खतरनाक तो इट इज डेथ तो वर्स देन डेथ एक्सपीरियंस हो गया है। डेथ एक्सपीरियंस हो गया वो भी अच्छा परंतु जो शादी देखते हैं ना ड्रीम में, वो बहुत बुरा होता है उनका। ठीक ऊपर नहीं, बुरा इसीलिए कुछ ड्रीम ऐसा होता है जिसका ठीक अपोजिट ही अर्थ होता है जागृत में, और एक होता है उसका इसोटेरिक मीनिंग होता है, और दूसरा ड्रीम होता है ज्यों का त्यों, जो दिखे हो वही दिखाना पड़ेगा। वो होगा जो बिल्कुल देखते देखते जो जाग जाता है, वो ड्रीम सत्य हो जाता है, उठते ही वो इस चीज़ को देखते हैं। और कुछ इंडिकेटिव ड्रीम होता है, उनका कुछ इशारा होता है, और कुछ अपोजिट मीनिंग होता है। डेथ का पूरा ऐश्वर्य मिलेगा, और मान लो जैसे बाघ, हाथी, भालू, ये हिंस्र प्राणी आपका पीछा कर रहे हैं, तो उसमें कोई धन आपका पीछा कर रहा है, आपको मिल जाएगा। स्वामी जी, आप जैसा बताए कि डेथ एक्सपीरियंस को देखा है, मगर ये अपने आप को एक बॉडी से ही दूसरे बॉडी को देख रहा होगा। ये देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, ड्रीम में भी देखा जा सकता है और प्रत्यक्ष में भी देखा जा सकता है। कैसे?
कैसे? ये ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला और प्रोसेस न समझो। आप अपने हाथ को देखते हो? देखते हो क्या? हैं? देखते हो? तभी तो कहते हो मेरा हाथ। मैं हाथ नहीं कहता हूँ, है ना? मैं हाथ से अलग हूँ, अलग हो करके देखता हूँ। अच्छा, ये किताब मेरा है, कहा ना? इसका क्या अर्थ हुआ? मैं किताब का दृष्टा हूँ, देख रहा हूँ, और किताब के साथ मेरा कोई संबंध है, तभी मैं मेरा कहा। मेरा किताब है, संबंध जोड़ा। संबंध दो में होता है, एक में संबंध नहीं होता है। फॉर्मूला समझ गए? संबंध दो में होगा। अच्छा, तो दो में होगा तो एक बनेगा दृष्टा, दूसरा बनेगा दृश्य, बनेगा ना? अलग बनेगा। तो अगर आप शरीर को अलग देखते हो तो आप दृष्टा बनते हो। ऐसे ही तो ये जो सारा दुनिया को ज्ञानी लोग दृष्टा के रूप में देखते हैं, दुनिया से अलग हो करके देखते हैं। दृष्टा दृश्य दोनों एक नहीं है, यद्यपि बेसिकली एक है, व्यवहार में एक नहीं है। जैसे मेरे से मेरा आंख अलग है ना? तभी तो मैं कहता हूँ मेरा आंख। तो ऐसे ही ये जो बहुत इंटेंसली और कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक जप या ध्यान अथवा विटनेसिंग को अभ्यास करते हैं, तो आप शरीर को अगर विटनेस करते रहोगे तो आप शरीर से अलग हो जाओगे। आप दृष्टा बन जाएंगे, शरीर आपसे अलग दिखेगा। प्रैक्टिकली ये होता है, और तब भी आपका दृष्टापन पक्का होता है। और ये कंटिन्यूअस साधना से, सिंसियर कंटिन्यूअस साधना कुछ समय तक करने से ही संभव है। बहुतों का एक्सपीरियंस इसमें प्रमाण है, अनुभवी प्रमाण है। ये ऐसा देख सकते हो, स्वप्न में देख सकते हो अपना मरण। तभी तो मैं कहा ना, अपना मरण देखना बहुत ये स्वप्न शास्त्र कह रहा है, और आध्यात्मिक शास्त्र कहता है अपना मरण स्वप्न में देखना, प्रत्यक्ष में देखना। जैसे ध्यान करते हैं तो आप ध्यान में आप देख सकते हैं आप शरीर से अलग हो गए। शरीर आपका ऐसा एक मूर्ति के माफी पड़ा हुआ है, आप शरीर से अलग हो करके। ऐसा तो शरीर से अलग होते हैं परकाय प्रवेश वगैरह, जैसे हमारे योगी लोग करते हैं ना, अपने शरीर को छोड़ करके तो जाना है, तो छोड़ेंगे कैसे? अलग होने से तभी तो छोड़ा जाता है। तो ये शरीर एक मुर्दा के रूप में पड़ा रहेगा, ये संभव है बिल्कुल। तो इसको साधारण साधक को तो ये अनुभव नहीं होता है। जो बहुत ऑनेस्ट, सिंसियर और कंटिन्यूसली लगा हुआ है, उसका कभी ना कभी ये तो अनुभव होता है। तभी वो साक्षीपना का अनुभव करता है। दुनिया सब ऐसे ही है, एक ड्रीम है, तभी अनुभव होगा। ऐसा बोल देने से नहीं होता है। बोलिए। महाराज, फ्रॉम अ रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो दुनिया से अलग होना माने अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ल्ड है। यस, फ्रॉम लॉजिकली वो इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ल्ड तो पढ़ सकते हैं, उसी में ही आता है ना वो। independent is independent. That is also you have to understand what is the meaning of independent. I am dependent in myself. That is called independent.
I am dependent in, not out of me. That is called independency. Split it, never mind. In, dependent. Dependent in, not out. समझे? Within. 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 Dependent within myself. That means self-dependent. So we are discussing upon death, just as seeing your own death in the dream is not real. It is possible. You can see your death in the dream. But rarely people see it. It is not impossible. But when you see your death in the dream, you are the seer. You are alive. That's how you see it. And how can you see the death of your own self? So means it is meaningless. It has got no meaning at all. Similarly, this world as you see, it is meaningless. It is just like a dream of death of yourself. Do you understand this simile? This example is given. I saw my death in my dream. It is meaningless, isn't it? I cannot die. I am alive. I see. I am the dreamer. So I am alive. When you dream some dreams, do you think you are dead? Can you say you see the dreams after death? You see your dreams when you are alive. So how can you see your death in your dream? If you see, it is meaningless. Isn't it? Baseless, meaningless. Similarly, all these visible world, they are meaningless. Meaningless. And how meaningless? Why he gave this example, seeing your own death? Why he gave this example? See, when you see something, let us analyze the perception theory. How you perceive the objects. We perceive the objects through mind and senses. 5 senses of knowledge. The thought waves, they go out of the gate, means the particular thought wave will go out through particular respective sense. If it is a thought of form, then it has to go through the eyes. Eyes see the form. So what happens then? The thought wave, it is a wave. So it has a motion. So it goes from in to out. Okay? When it goes out, so many objects are there. It gets interrupted by the object. If it is interrupted by one object, then it has to stop there. If you are walking and door is closed, you have to stop there. Huh?
and then you can come back. That is the only way. It is locked. Complete stoppage. So you cannot enter in. That's how our thoughts, they go and strike against the object, and they cannot pass through the object and go. That is not there. That power is not there. So it is interrupted by the object. And then what happens? To come back in the same way, it has to return. Where to go? Go to its source, where from it has started. So that process is known as perception. It gets out and gets obstructed by object, particular object, respective objects, and they come back to the source. Source is nothing but the subconscious mind. From there, all these waves, they start going outside and coming back to the source. And they deposit some impressions. How they are impressed or influenced by the object. Those impressions are called memories. So now, this is the process. Now, when it strikes the object for a moment, what happens? There is a stoppage, isn't it? There is a break in the speed. That break is no thought, isn't it? No motion means no thought. Thought is a vibratory system. So vibrations are obstructed. So there is no motion, no thought. Thoughtlessness for a fraction of moment. That is, in the other language we can say, death of the thought. That's how we see kumbhak of our breath, outgoing, incoming, and there is a stoppage. Then only it can stop and go out. When it has gone out, there will be stoppage. Bahya kumbhak, antar kumbhak. Outside stoppage and inside stoppage. Without stoppage, you cannot change your direction. Isn't it? Whether the opposite direction or any direction. You have to be obstructed, then only you can change your direction. So, for a moment, fraction of a second, it is stopped means dead. No thought. Understood? So, every moment we are dying and again getting alive. Death and life, it is continuously going opposite to each other. That is called life's journey. When you walk, you cannot walk continuously. Understood? When you drag your hind leg to front, there will be a stoppage. Without break, no action is possible. That's the law of nature. That's how change is taken place. So change means death and life, positive and negative opposites. The whole world is made up of pairs of opposites. So death and life. Every moment we are experiencing death, that means stoppage of our journey, and every moment it is renewed, continued, so that is called life. In that way also we experience the life means
the presence, absolute presence. We experience the presence of the absolute, the truth, and we forget it. When everything stops, we forget it. And physically, in our relative world, when one dies, physically means as a body, when the body dies, this has to happen. A time comes between the death and life. In between, a coma, a state of coma comes where you forget everything. उसको कहते हैं मूर्छा. मूर्छा, मरने के पहले मूर्छा आता है. किसी का दीर्घकाल तक उसको हम कोमा कहते हैं, लेकिन किसी का पता नहीं चलता है, वो अपने आप कुछ देर में, तभी उसी मोमेंट में हम सब यहाँ का भूल जाते हैं, इसी दुनिया का, इसी जीवन का सारे संस्कार को हम भूल जाते हैं, सारे मेमोरी भूल जाते हैं, और दूसरे जन्म में ये सब याद नहीं आता है. तभी कोई कोई रेयर केस में जाति स्मर होते हैं जो नहीं भूलेंगे, वो सारे इम्प्रेशन को अगले जन्म के लिए ले जाते हैं. रेयरली, रेयर केसेस. तो ये जो प्रोसेस है हमेशा एक स्टॉपेज है. उसी स्टॉपेज को जन्म और मरण के बीच में उसको मूर्छा कहते हैं. सबको इसको क्रॉस करना पड़ेगा. बॉर्डर लाइन, LOC, बॉर्डर सामने हर जगह पर है. बिटवीन एवरी टू देयर इज ए बॉर्डर लाइन. दैट इज कॉल्ड संध्या. संध्या मीन्स neither this side nor that side, the gap. Without that, the world is impossible. Two are impossible. Without gap, you cannot see the two. So that is how everybody faces death every moment. Every moment is your birthday, and every moment your death day. That's how you progress in your life and continue to live. So should we prefer death or life? Both are same. तेरी क्या? नहीं समझ होगा नहीं. नहीं होता है. नहीं होगा. One has to. But somewhere I read death preference is better than life. No, Swamiji is saying कि thought waves goes and Death comes. is better than life, isn't it? Yes. No, In that case, what do you understand by death? Full stoppage. That is called death. That is called kumbhak also. That is what the yogis do. thought waves goes and it stops somewhere where it finds some kind of barrier. That stoppage is called death, and that is also known as kumbhak in the yogic language. Yes. So preference should be death. Okay, nice. Eternal death. Eternal death, उसी को तो कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध. और क्या कहते हैं? समझे? भाषा बहुत कुछ, तरीका बहुत कुछ, लेकिन बोलते हैं एक ही चीज को. एक ही चीज बोला जाता है, दूसरा चीज है ही नहीं बोलने के लिए. If you prefer death, that death is life, real life, eternal life. इसीलिए मैं कहा दोनों एक ही चीज का नाम है. And that is called real presence. Present is present, and future and past, they are dead.
unseen, unknown, or overcome. It is dead. Presence is real life, and that is in between two, and that is called संध्या. इसीलिए तो हम संध्या वंदन करते हैं. संध्या वंदन क्यों करते हैं? इसी उस समय परमात्मा का साथ संबंध जोड़ने के लिए, अपने आप को समझने के लिए. इसलिए तो संध्या वंदन किया जाता है. और इस रूप से वो कह रहे हैं कब तक यह भ्रांति रहती है. ये जो भ्रांति, किसका भ्रांति? मैं अपना मृत्यु को स्वप्न में देखा, या असंभव चीज को मैं देखा, असंभव चीज को देखा. तो देखा तो ये एक भ्रांति है, भ्रम है, अज्ञान है. यह अज्ञान कब तक रहेगा, ये सवाल आया. अज्ञान कब तक रहता है? The question arises this misunderstanding. I have seen my death. How can you see when you are alive? You can see, how can you see your death? It is impossible, meaningless. So this is how we are bewildered, we are confused. So how long this confusion, misunderstanding will continue? Where is the end of it? So tomorrow we shall see. है कि नहीं? इसमें फंसेंगे तो अभी निकल नहीं पाएंगे. Tomorrow we shall see how long it continues. हाँ, कल देखते हैं, हम कर सकते हैं. कोई थोड़ा बहुत जिनको जरूरत पड़ेगा उधर देखते हैं. कौन आपको जरूरत पड़ेगा उधर? आई कैंप तो है, ये अस्पताल वाले कर लेते हैं. देखेंगे जरूरत पड़ेगी. अगर जरूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा समय के लिए करके बंद कर देंगे. मेरे को लगता है अभी तो पेशेंट्स आने शुरू हो गया. आज ही ज़्यादा ज़रूरत है. कल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. कल तो ऑपरेशन चलेगा. ऑपरेशन टाइम पर बीच बीच में थोड़ा देखभाल करना पड़ता है. उसी के ऊपर तो झगड़ा हुआ था गया. देखभाल प्रॉपरली नहीं करने से ना समझी सब एक दूसरे को देखते, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. यही धंधा आ जाता है. करेंगे तो इसी प्रकार हम कल देखेंगे ये जो हमारे भ्रम, ये जो हमारे अज्ञान अथवा समस्या अथवा दुख, सब जो सारे दुख का ही कारण है, ये कब तक रहेगा और कैसे अंत होगा? कब तक रहेगा मतलब अगर अंत होगा कभी तो कैसे अंत होगा? दूसरा सवाल उठेगा, कैसे अंत होगा है? तो इसको कल देखेंगे. इसको दूसरे भाषा में भी हम कह सकते हैं अंधेरा है अभी, है ना? अज्ञान का नाम अंधेरा. कब तक आलोक आएगा? आज रात है, अभी मैं रात में सोया हूँ. कब तक दिन आएगा? क्या उत्तर दोगे? मैं सोया हूँ रात को, नींद में मैं पूछ रहा हूँ तुमको, अरे ये रात कब तक रहेगा? कब दिन आएगा? कब मैं उठूंगा? यही सवाल है ना. कल विचार करेंगे. Tomorrow we shall see. I am sleeping at night. I want to get up. When the day will dawn? When there will be day? This is the question. How long this ignorance or misunderstanding will continue? When there is
where is the end and how is the end, side by side. The question comes, how to end it? Because why do you want to end it? Because this misunderstanding, this ignorance is the cause for all the problems, all the miseries. Misunderstanding itself is cause for misunderstanding. All fights, all problems, the whole world is nothing but a continuous battlefield. Every moment battle is going on. महाभारत अंदर बाहर, रामायण अंदर बाहर, सब जगह पर दो में लड़ाई. जहाँ दो हुआ वहाँ लड़ाई है. अभी ये एक अंगुली है, दो अंगुली हुआ तो आपस में लड़ रहे हैं. ये लड़ना मतलब ऐसा नहीं, ये बिना लड़े लड़ाई कर रहे हैं. ये छोटा है तो ये करा मैं बड़ा हूँ. ये बड़ा है तो ये करा मैं छोटा हूँ, तो कल बड़ा बन करके दिखाऊंगा. छोटा है मतलब बड़ा बनेगा, छोटा ही तो बड़ा बनता है. तो इनका बिना लड़ाई दिखता हुआ लड़ाई में हर पल में लड़ाई चल रहा है. इनका संबंध है, कोई मोटा है तो कोई छोटा है, कोई लंबा है तो कोई पतला है, कोई कैसे है, तो हमेशा संबंध में लड़ाई चलता है. इसीलिए कहा गया सारा संसार एक बैटल फील्ड. द होल वर्ल्ड इज ए बैटल फील्ड. एवरी टू they are opposite to each other, so there is fight. And what is the result? Result also is given always. The stronger will dominate over the weaker one. Stronger always is winner. So try to be strong. And how we get strength? If you are one, without a second you are strongest. And if you are divided, then you are gone. Your strength is divided. Okay? And if you try to be one, that means one opinion, one head. When you fight, if one commander is there is sure to win. And if different commanders and they differ from each other, then how can the soldier fight? There is every chance of defeat. Yes? Yeah, Swamiji, when somebody doesn't have any more desires, what's the point of staying? Pardon? When desires are no longer there, what's the point of staying? It's just carrying on this body like day by day and just trying to make it work. It's nonsense. Okay. What happens when desires are gone altogether? Isn't it? These desires. Yes, what happens? Is it the question? What happens when there is no desire? That means, what is the state of desirelessness? Isn't it? The question is, if the desires are not there, then what is the value of living? That is similar. What happens? What is the result when there is no desire? No mind. Now we shall decide. Please remember it. Remind me it tomorrow. To explain it. Yes. What is the state of desirelessness and what is the meaning of living then? What do you
understand by living? We have to discuss it. And then only. And what do you understand by desires? When we analyze the question, the answer is there hidden. We shall discuss it tomorrow. And another question we shall decide how long it will remain, all these problems. And what is the way to get rid of all these problems. Okay? Tomorrow. Hari Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasisthate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai. Satchidananda Bhagavan ki jai. Sabda Brahma ki jai. Saraswati Maharani ki jai. Yoga Vasistha Bhagavan ki jai. Hari Om.